Hello everyone, welcome to Ekam Academy. Welcome to the UPSC preliminary 2024 paper discussion. So I am going to deal certain questions of geography and environment to you. As everyone know, as guest, you know how many questions came from this particular segment? From geography and environment, if you could see, from geography and environment, if you could see, 33 questions came directly. 33 questions came directly. Clear? Or 17 questions are from indirect in nature, which has relation with geography. इसका मतलब total 50 question. I'll give the proof evidence. Don't worry. I'll give the proof evidence of every question. So मेरे पास set C है. So इससे अलावा जो क्वेश्चन है एंड में मैं बताता हूं पूरा क्वेश्चन नंबर. डायरेक्ट 33 क्वेश्चंस कहां से आए and what are the claiming questions which I am claiming that by using geography knowledge you can answer this 17 too. So first we shall discuss this direct 33 questions, then we will go and at last मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन में ज्योग्राफिकल नॉलेज जरूरी है ताकि అంటే మీకు ఈ 17 క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేసే ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. లెట్స్ స్టార్ట్ అప్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో ఐ యామ్ డిస్కసింగ్ ద సెట్ సి. Okay, so question number 2, if you could see, India does not import apple from United States of America. This is 100% wrong. Why? Because there recently we had this particular segment of surge of 40% of apple import from the USA. So this statement is blindly wrong. If you don't know this statement, see here the questions which we would be discussing, it would be in such sense certain questions through one particular statement itself we can answer. So if you could see in the first 3 statements, they have been given statement 1 and 2 are correct, statement 1 and 2 are correct, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So here when the statement 1 becomes false, obviously what would happen is statement 1 is incorrect is only in D. So by using common sense, if you know statement number 1, we can mark this option as a D. So D is the right option for this particular question. है ना? So D is the right option. In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. This is absolutely true. Okay, the law shall prohibit the import of genetically modified food as such. Clear? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली एप्पल फार्मिंग एंड एप्पल इंपोर्ट के ऊपर. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम इन ज्योग्राफी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th वाला ज्योग्राफी डायरेक्ट 19th क्वेश्चन है ना. Consider the following statements. I have set this particular segment in IRP session, Impact Revision Program 2024 जो हमने मई में किया था वहां पे like I have did mapping segment. ఆ mapping segment లో రెడ్ సీ న్యూస్ లో ఉంది, రెడ్ సీ న్యూస్ లో ఉంది geographical రెడ్ సీ గురించి కానీ any particular aspect of red sea question might be coming. I have said this n number of times. Tomorrow, that is Monday 17th June, I will be attaching the proof videos to you. So Red Sea receives very little precipitation in any form. This is true. No water enters the Red Sea from rivers. This is also true. So these are the two aspects which are true for this particular question. Both 1 and 2 becomes the right option. Both 1 and 2. Both 1 and 2. बहुत सारे लोग सही किए होंगे इस पर्टिकुलर ऑप्शन को. So next direct question है 20th वाला 20. According to the Environment Protection Agency, which of the following is the largest source of sulfur dioxide? Generally, in Indian coal, sulfur is very high. So coal is mostly used in power plants. So accordingly, power plants using fossil fuels would be the right answer for this. But according to the Environment Protection Agency, the largest source of sulfur dioxide emissions maximum would come from them. But in some of the reports, they are also showing the alternate aspects. So I am putting this as hold, but my sense is D. But it is in which interpretation UPSC would be going.
in which interpretation UPSC would be testing, that is the most important aspect. But मेरा जो मानना है, this is power plants using fossil fuels is the right. This is the third direct question. तो 29th क्वेश्चन नेक्स्ट वाला 29th डायरेक्ट है, ठीक है। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल से हैं, दे विल क्लियर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वेरी क्लियरली, है ना। So if you could see this particular question, the longest border between any two countries in the world, as simple as possibilities like China and United States of America, it is somewhere around above 8,900 kilometers of border these two would be having. So Canada and United States of America is the right answer. This is the fourth डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। नेक्स्ट जाएंगे सीधा 72 क्वेश्चन पे। 72 से पूरा ज्योग्राफी डायरेक्टली, 72 क्वेश्चन से पूरा 100 तक ज्योग्राफी 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 ज्योग्राफी। हमारे बच्चे लाइक पीपल हु हैव हर्ड द लेक्चर्स ऑफ माइन, directly they have attempted all the questions. See, I am not claiming a wrong or false statement or any false claim nahi kar raha hu main. People who might have listened to my classes, they would say this particular statements within the comment section. Baki wo I am leaving it on. So the organisms cicada, froghopper and pond staker, they are generally insect based categories. So this is the 71st one which is there, which is also one direct question. ये current affair news में था as such. So if you could see 72nd question, 72nd question which is there, consider the following statements in this 72nd wala. So this was in news already regarding with the chewing gums and all. So if you could see, many chewing gums, statement number 1, found in the market are considered as a source of environmental pollution. Yes, absolutely true. And many chewing gums contain plastic as a gum base. Yes. So both the statements are correct, and statement 2 explains statement 1 perfectly. So this particular statement जो है, statement 2 explaining statement 1 perfectly, this is absolutely right. 72nd question को ये interpretation है. Clear. Moving further, if you could see 73rd, this completely came from current basis, but every year UPSC have this particular habit of asking the question from habitats and their particular environments. So agar aap dekhenge, they have given the countries and the habitats which are found here. 73rd question, इसमें Brazil जो है, clear. So in this particular Brazil we don't have idri. Idri is generally found in Madagascar. Idri is found in Madagascar. And elk, which is there, it is found in Central Asia, Siberia. Central Asia, Siberia, ये equatorial region में नहीं मिलेगा ये elk. And bonobo, it is found in Congo basin of Africa. तो ये मडागास्कर दे रखे इसमें. So all the three which have been given in this particular segment, they are absolutely wrong. They are absolutely wrong. So none of these particular options which have been given, they are wrong here. All the three, clear, they are not correctly matched as such. They are not correctly matched. Jayant, is this clear now? Clear. 73rd one. Next comes 75th one. 75th one. Consider the following statements. Lions do not have particular breeding season. Yes, absolutely, it's true. So general breeding season बोल के कुछ नहीं है lions के लिए. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. So this is also the perfect statement. बहुत सारे लोग चीता के बारे में क्वेश्चन नहीं आ रहा, चीता के बारे में क्वेश्चन नहीं आ रहा. They people were saying this. See, देखो भाई चीता के ऊपर क्वेश्चन आ गया. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. नहीं, they shall be marking their particular scent territory by scent marking.
In lions it is only male which we do, but in leopards it shall be the females and males which would be doing this particular scent marking through their particular urine. मतलब यूरिन से वो एक टेरिटरी में ये बनाएंगे, क्लियर बॉर्डरिंग बनाएंगे, एंड दे टेंड टू प्रोक्लेम देयर पर्टिकुलर टेरिटरी. तो इसमें 1 and 2 which are there, they are absolutely right. 75th question, 75th में this is right. Are you getting this point? तो नेक्स्ट क्लेम है 77th का. 70 so 77th क्वेश्चन है ना. कंसिडर द फॉलोइंग: बैटरी यूसेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, rooftop solar photovoltaic units. How many of above are considered as distributed energy resources? Distributed energy resources. So in this, all the four which you have given, actually this is current affairs plus economy plus economic resources or economic geography plus environmental aspect. मतलब सब मिला के सब में ये claim कर सकते, but I am claiming it here because energy resources as a part of geography we have discussed, so I am claiming this particular question here. So in this particular segment, all the four which are there, all the four, they are absolutely right. They are absolutely right. So 77th question में all the four are right. चलो भाई आगे जाते हैं 78 में. 78. So which one of the following shows a unique relationship with insect that has co-evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree? Answer is fig. इसका आंसर जो है that is fig. Fig is the right answer. Fig is the right answer. 78th वाला right answer है ना. Next 79th question. Consider the following: how many of the above have poisonous species among them? Generally ऐसे क्वेश्चंस जब यूपीएससी देंगे, मैक्सिमम चांसेस आर देयर दैट they would be giving the absolute aspect: butterflies, fish and frogs. All these three, all the three, they generally have this particular poisonous nature. 78th question, it was not from current affair based, it is a nominal general knowledge of ecological sense which you should have. So that is from a static based. Okay, so this is 79th question. ये हम क्लास में डिस्कस किए थे ऑलरेडी. नाउ अभी आता है मजा 80 पे. क्लियर. So consider the following statements: cashew, papaya and red sander. So how many of the above trees are actually native to India? Cashew is native to Brazil, northeastern Brazil, not India. Papaya is native to Mexico, Central America, है ना. सिर्फ एक which is native to India, that to Andhra Pradesh, that to Seshachalam Hills. शेषाचलम हिल्स. क्लियर. जो पुष्पा है ना, पुष्पा मूवी में जो देखा गया था रेड सैंडर, पुष्पा मूवी में जो देखा गया था भाई, सबको याद है रेड सैंडर. ओनली वन बिकम्स राइट ऑप्शन फॉर दिस 80th वन. ओनली वन बिकम्स राइट ऑप्शन फॉर दिस 80th वन. 80. ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं 82nd क्वेश्चन पे. So now we will see 82nd question. With reference to water vapor, which of the following statements are correct? Water vapor के बारे में पूछे. Every time I say water vapor, I say it is the biggest culprit of greenhouse gas and it has more impact than carbon dioxide. So it is a gas the amount of which decreases with altitude. Yes, absolutely. 95% of water vapor
is present within 5 kilometer. Beyond that, water vapor decreases. Absolutely, this is a right statement. Its percentage is maximum at the poles. This is completely dumb because highest temperatures are with the lower latitudes. So obviously, highest evaporation happens in lower latitudes. Highest water vapor would be at maximum water vapor would be at lowest latitude. So option statement 2 is wrong. Only one becomes the right option. This is a base question from our classes or from our NCRTs. You can solve up this particular question directly. Okay. तो फिर आते हैं 83rd क्वेश्चन पे. भाई ये देखो 83rd क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तो मैं बोल बोल के बहुत थक गया हूं भाई. Whenever I discuss climatic regions, people see with their idiotic faces, thinking that सर ये क्यों पढ़ा रहे, वो क्यों पढ़ा रहे, why you are teaching all this nonsense. भाई देखो नॉनसेंस से ही क्वेश्चन निकलते हैं. Clear questions would come from nonsense. Now at least realize, come into enlightenment phase. है ना, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं. There is nothing important in UPSC. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. एक बच्चा ने मेरे से पूछा भाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी. मैंने बोला विच एवर फॉल्स अंडर सन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. ओके. So if you could see, annual and daily range of temperatures are low. So generally in equatorial region we don't have any winter season. Obviously annual range is low. Diurnal range is also low. Precipitation occurs throughout the year. I'm sorry. आज I am suffering with cold and fever, but still आपके लिए I wanted to give you the best key available in the market. That's why taking risk I have been here. If I would if I would cough or sneeze in between, please don't mind. Request from my side. Precipitation occurs throughout the year. ये भी सही, ये भी सही. And rainfall varies between 50 centimeter to 250. So ये कहाँ पे भी हो ही नहीं सकता. This is only equatorial type of climate which would be experiencing this. A direct question from our class notes. Direct question. Next question आते हैं भाई 84th पे, है ना. ये तो मैं बोल बोल के थक गया हूं. I have said it 200 times. Coriolis force, Coriolis force, Coriolis force. मेरे क्लासेस अगर आप सुनेंगे क्लाइमेटोलॉजी वाले, अप्रोक्सीमेटली क्लाइमेट खत्म होने तक एटलीस्ट मैं 200 बार यूज करता हूं इसको. कोरियोलिस फोर्स, द फोर्स विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. कोरियोलिस फोर्स. क्लियर. इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी. यस, इट इज वाइस वर्सा इन नेचर. As Coriolis force increases, the wind velocity increases, and the wind velocity increases, Coriolis force increases. It is maximum at the poles and absent at the equator. This is also absolutely true. Both 1 and 2 becomes the right option here. Why? Because if you see, as Coriolis force is absent at the equator, we don't have tropical cyclone formations over there. So as equator is the greater circle, it is 0 at the equator. Pole, it is maximum. So इसको आंसर डायरेक्ट हमारा क्लास नोट से निकल के आया है 84th वाला. I'll show you proof videos बच्चों. वेट करो, प्लीज वेट ऑन. टुमारो मंडे आई विल बी कमिंग अप विद प्रूफ वीडियोस. डोंट वरी. 80% ऑफ क्वेश्चंस मैंने प्रॉमिस किया था मेरा क्लास नोट से. नहीं आया तो आई हैव सेड दैट आई विल रिजाइन दिस टीचिंग जॉब एंड लीव एंटायरली. सो मैं प्रूफ दिखाता हूं 100% आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है 85. डायरेक्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, जून 21 वाला. On June 21st every year, which of the following latitudes experiences sunlight more than 12 hours? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा तो ये. आर्कटिक सर्किल 24 आवर नाइट डे एक्सपीरियंस करेंगे ये. तो 3 जिस जिसमें है वो कट गया. सो इक्वेटर इट एक्सपीरियंसेस लेस देन 12 आवर. ओके ना, 12 आवर नहीं है. तो 2 and 4 becomes the right option for this. 2 and 4, 2 and 4. इसमें इक्वेटर नहीं आता है, कैप्रिकॉर्न नहीं आता है. 2 and 4 becomes the right option. ये भी डायरेक्ट सवाल है. Jayant, hope you know, like we have discussed all these things. Yes or no? Jayant, you have to give these answers, right? भाई तगड़ा क्वेश्चन. Which one of the following regions have the world's largest tropical peatland? Peat का मतलब होता है marshy land. जब ज्यादा बारिश होता है, like we would be having that. తెలుగులో ఏమంటారండి దాన్ని? బుడదలాగా ఉంటదండి. Yes or no? So a burdalaga untadi, which holds about 3/4 of world global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect of the global climate. Which of the following denotes that region? Answer is Congo Basin. See, दो regions में है, Amazon Basin and Congo Basin. They would hold huge amount of marshy land and peatland.
but in comparative, relatively, 3 holds about 3 years worth of global carbon emission. So maximum coverage happens in Congo basins. Obviously Congo basin becomes the right answer. In some cases ये भी सही हो सकता है, but ये क्वेश्चन के हिसाब से Amazon basin is the not perfect answer. ज्योग्राफी का क्वेश्चन इजी नहीं है जयंत, मैंने पढ़ा है इसीलिए इजी दिख रहे वो, बाकी लोगों से पूछो ज्योग्राफी क्वेश्चन इजी है क्या. Once you ask people who have read geography from others, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़ाते, but I have focused to the question based approach. Next question 87th question I have left it to the current affair, तो 88 डिस्कस करते हैं डायरेक्ट. सो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यू नो. 88th जो क्वेश्चन है, done. Consider the following: carabid, beetles, centipedes, termites, flies, wasps. Clear? लाइट और बन जाए सर. सॉरी, लाइट का थोड़ा डिस्टर्बेंस था. क्लियर? सो दिस इज समवॉट इंटरप्रिटेड, बट मैंने सच बोले तो आई हैव चेक्ड इट विद चैट जीपीटी, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चेक किया था. तो इसमें सारे 5 ऑप्शन दिखा रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज फ्लाइस एंड वैस जो हैं they doesn't have parasitoid species, but chat gpt is saying that all these 5 are having it. So I am going with better artificial intelligence itself. इसको मैं all 5 ही आंसर दे रहा हूँ, because human knowledge थोड़ा बहुत कम ही होगा इससे कंपैरिजन से. So these 5 options which are there, they all have parasitoid species which are attached to it. So for this particular aspect, all 5. Sometimes all 3 can also become the answer, but all 5 is the most thing which I am using it here. ठीक है. 89th क्वेश्चन को जाते हैं. 89th क्वेश्चन है ना. ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, इन दिस 3 which of the following belong to a pea family? Clear? So all these belong to leguminous family, but these particular 2, they belong to this particular pea family. Pea family. Clear? Generally they belong to a bee family as such, है ना. जो बीन्स होते हैं सोया बीन्स बोलते हैं. So soya beans, they doesn't fall under this particular pea family as such. So only 2 becomes right option for this particular question. तो थोड़ा क्वेश्चन आगे जाते हैं. 90th क्वेश्चन, ये थोड़ा पढ़ने का क्वेश्चन है. इन इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है is placed under vermin category in wildlife protection act 1972. ये सही है. Why? Because this particular vermin category, if we want to kill these particular species, generally this Indian flying fox is a threat to orchid farms. Orchid farms, you know. So that's why they have kept under this vermin category, so they can hunt these particular species. They feeds on blood of other animals. ये तो गलत है भाई. So they feed on fruit. They are also called as fruit foxes. So स्टेटमेंट 2 is wrong. स्टेटमेंट 1 is the only correct one. तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन 3 जो है, क्लियर. सो स्टेटमेंट 1 is correct, स्टेटमेंट 2 is wrong. So do you explain geography on YouTube? Yes, I would be helping you. कौन सा टॉपिक चाहिए, I'll be helping you. So for this statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect as such. ठीक है. नेक्स्ट जाते हैं 91st क्वेश्चन पे. So 91st question. Consider the following statements. 91st one. The atmosphere is heated. The atmosphere is heated mostly by
इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। 100 बार बोला था मैं क्लास में, atmosphere is never heated from insolation, rather it is heated from terrestrial radiation. By incoming solar radiation, then by terrestrial radiation. More by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Absolutely wrong. So statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave terrestrial radiation. तो स्टेटमेंट 1 गलत जो है तो वो आपको दिखेगा सिर्फ यही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है, दिस इज द परफेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट 92nd one, 92nd one. Thickness of troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. Okay, so yes, this is true. And at the equator, heat is transported to greater height by strong convectional currents. Yes, so both the statements are correct, and both these statements are interlinked with one another, and statement 2 explains statement 1. A is the right option for this particular question. Okay, so this is 92nd question. So अब से अगर आप देखेंगे पूरे 100 तक अपना ही चलेगा भाई ज्योग्राफी, है ना। अब ये थोड़ा कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, क्लियर, where people have conflict related with this question number 93. How many of the above are the products of volcanic eruptions? So I am taking this particular segment as pyroclastic debris, ash and dust are common, sulfur compounds are absolute, but nitrogen compounds का question mark है. So all 4 नहीं हो सकता है, only 3 comes into picture. Nitrogen compounds cannot be taken as a segment of product of volcanic eruption, but nitrogen compound exist in that particular volcanic cone which is there. So how UPSC is going to interpret for this particular question, we don't know. Either answer would be only 3 or only 4, but मेरा जो answer है that is only 3. So we have to cross check with UPSC, but मेरा answer only 3 है, but chances are there all 4 can also become as an option. Okay, now 94th one अगर आप देखेंगे, ये तो तगड़ा क्वेश्चन है भाई. Many people they fail addressing this particular question. आइसोथर्म मैप पढ़ेंगे ही नहीं, डायरेक्ट टेम्परेचर का चैप्टर स्किप करेंगे. बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज आइसोथर्म. जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था आई हैव एक्सप्लेन्ड क्लियरली. जनवरी का आइसोथर्म दिखाया था, दिसंबर का, जुलाई का दिखाया था. सो आइसोथर्म deviate to the north over the ocean and to the south over the continent in January. Absolute perfect statement है ये. Presence of cold oceanic currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherm bend towards the north. So isotherm colder नहीं है, North Atlantic Ocean is not colder, it is bit warmer. तो ये colder से क्या कर सकते हैं, इसको wrong बना के only one को हम टिक करके we can make it right statement. है ना. So option 1 is correct, option 2 तो निकाल ही दो वहां से. नेक्स्ट 95th क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अभी का बच्चे को पता नहीं है, बट कोकोआ प्लांटेशन क्रॉप, वेरेवर यूरोपियंस हैव वेंट देयर दे स्टार्टेड प्लांटिंग दिस पर्टिकुलर कोकोआ. कोकोआ के बारे में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में मैंने बताया था. कोटी डी आइवोरी एंड घना, दीज आर द 2 कंट्रीज which are known for cocoa. West African countries जो हैं, these are known for huge amount of cocoa producers. Most of this cocoa it goes into chocolate industry directly, it goes into chocolate industry. Done. तो ये है 95th क्वेश्चन. अभी करेंगे 96th वाला. Ninety-sixth question, if you take, with reference to Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which of the following sequences is correct? तो west to east का मतलब इधर से इस तरफ पूरा इंडिया का, है ना. तो ईस्ट पे ज्वाइन होगा ऑब्वियसली कोसी, वेस्ट फर्स्ट ज्वाइन होगा गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक एंड कोसी. ये तो लाइक पीपल हु माइट हैव रेड इंडियन ज्योग्राफी, है ना. सो वहां पे मैंने बताया था लाइक while I was explaining you regarding with the Ganga river system, हो सकता है you have to remember about
Left bank tributaries, right bank tributaries, I have made you to mark each and every point in it. जहां पे भी मैंने पढ़ाया था, I have made you to draw entire गंगा रिवर सिस्टम, ऊपर का जो अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी रिवर, एवरीथिंग आई हैव मेड यू टू राइट एंड मेक. प्रयागराज का मतलब है इलाहाबाद वेयर यमुना रिवर जॉइंस. तो ये सही ऑप्शन है इसका 96 का. 97 का अगर आप देखेंगे, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया. साला यूपीएससी ने अब तक कुछ करा नहीं, कुछ नया कुछ इन्वॉल्व नहीं किए बोल के बहुत खुशी था मैं. बट सुबह व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल, साला अपडेटिंग पब्लिक सर्विस कमीशन बोल के 3 स्टेटमेंट दे दिए. पागल है यूपीएससी, पता नहीं. रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक. स्टेटमेंट 1 तो सही है. रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट इसको हम कैसे लेंगे आंसर में, ये बहुत डिफिकल्ट है. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, है ना. तो ये तो भाई ये आंसर हो सकता है, बिकॉज रेन वाटर विल कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन ऑल्सो. सो बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1. ये इस साल का नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है. यस, बाय ड्राइंग रिवर सिस्टम आई हैव सेड यू जयंत. हाँ, नेक्स्ट ईयर पेपर पैटर्न का क्लू निकाल के गए. 1 2 3 स्टेटमेंट्स. पता नहीं यूपीएससी साइकोपाथ क्या करेगा हर साल, है ना. सो फॉर दिस आई एम पिकिंग अप दिस. आई एम सॉरी, एज ऑप्शन. अब ये देखो भाई, ये तो बहुत सारे लोग छोड़े होंगे, बट आई हैव मेड यू टू मार्क. जयंत याद है? सो वी हैव मार्क्ड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, है ना. नॉर्थ सी जो इंग्लैंड एंड नॉर्वे के बीच में होगा. सो इंग्लिश चैनल वुड कनेक्ट द अटलांटिक ओशन विद दैट ऑफ नॉर्थ सी. तो फिनलैंड, रशिया तो बिल्कुल नहीं है, फिनलैंड नहीं है, ओनली 2 बिकम्स द ऑप्शन. जर्मनी एंड नॉर्वे दे हैव द कनेक्शन विद नॉर्थ सी. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना. 99 देखते हैं भाई. सर सब डायरेक्ट बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे, गलत बोल रहे भाई. वीडियोस है मेरे पास, प्रूफ है, प्रूफ दिखा सकता हूँ. 80% क्वेश्चंस केम फ्रॉम माय क्लास नोट्स, क्लास रिफर्ड वीडियोस. यू कैन कमेंट इट इन द क्लासेस. वीडियो एक्सेस फ्री दे देता हूँ मैं, फ्री दे देता हूँ. यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, देख लो. वाटरफॉल्स मैंने बहुत बार आई हैव गिवन असाइनमेंट. मैंने वैसा लिस्ट नहीं दिया, बट आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर कंटेंट एज असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, सेइंग दैट इंडिया का टॉप 20 वाटरफॉल्स, रिवर्स एंड द स्टेट विच दे आर फ्लोइंग इन, मार्क देम एंड कम. असाइनमेंट दिया था जयंत, याद है? असाइनमेंट मैंने दिया था, है ना. जॉग फॉल्स एक बताया था मैं, शारावती रिवर बोल के. सो जॉग फॉल्स, गेरसोप्पा फॉल्स जो है, आई हैव गिवन यू एज एन असाइनमेंट, है ना. तो कैसे करना है असाइनमेंट दिया. हीना याद है? हीना शेख असाइनमेंट दिया था. इसीलिए बोलता हूँ असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास में भाई ज्योग्राफी पढ़ाना 100 आवर में इट इज डिफिकल्ट. 4 साल लग जाएंगे पूरे ज्योग्राफी पढ़ाने. इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर कम्युनिकेटिव मेथड विच कैन बी डन. दुआदार, मालवा प्लेट्यू रीजन, नर्मदा रिवर, करेक्ट है ये भी 3 पैटर्न क्वेश्चन है भाई. यूपीएससी इज गिविंग हिंट दैट नेक्स्ट टाइम से 2 पेयर नहीं 3 पेयर देंगे. साला दिमाग खराब करेंगे आपका. यूपीएससी इज सेइंग दिस. दुआदार क्लाउड ऑफ मिस्ट टू फॉल, इसका वीडियो भी दिखाया था मैंने. दुआदार वाटरफॉल्स, है ना. हुंड्रू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सुबन रेखा रिवर, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ यू कुड सी ओनली 2, फर्स्ट 2. गेरसोप्पा गलत है भाई, ये नेत्रावती रिवर पे नहीं है, शारावती रिवर पे है ना. सो 100th क्वेश्चन देखो भाई, 100th क्वेश्चन. सो सेंट्रल, ये भी मार्क करवाया था इन द मैपिंग सेक्शन. सेंट्रल एशिया वॉज जस्ट फोल्ड माउंटेन, गलत है. वॉज जस्ट ब्लॉक माउंटेन. यूरोप एज ब्लॉक माउंटेन, गलत है. सी, उल्टा पुल्टा दे दिया. मैं ऑलरेडी बोलता हूँ यूपीएससी उल्टा पुल्टा करेगा कुछ. सो दिस इज व्हाट दे हैव डिड. नॉर्थ अमेरिका, एपेलाचियन, साउथ ईस्ट एशिया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स. Clear. Now they have eroded completely and formed as residual mountain. Andy formation, Nazca plate with South American plate, they are the examples of fold. So इसमें भी both 2 statements, only 2 statements जो हैं
दे आर परफेक्टली मैच्ड, दे आर परफेक्टली मैच्ड, ठीक है। सो ऐसे पूरे डायरेक्टली 29 क्वेश्चंस आई एम क्लेमिंग, 30 क्वेश्चंस आई एम क्लेमिंग एज सच, है ना। सो अपार्ट फ्रॉम दैट indirect nature में what all questions have come, see I am claiming directly 29 questions from geography and environment, direct questions from class notes, है ना, direct questions from class notes I am claiming it. $29 questions, बाकी 21 questions also I am claiming that with geography knowledge these questions can be solved. आप एक बार चेक कर लो, ये 29 questions का तो मैंने आंसर दे दिया, बाकी 21 questions might be coming in IR, might be coming in current, might be coming in some other subject, but ये 21 questions भी geography knowledge से solve हो सकते हैं. I am writing the question number according to the set C. According to set C, I am writing this question. Question number 6, question number 7, question number 49, question number 56, question number 66, 67, 68, 69, question number 55, 64, 81, 71, question number 45, question number 64, है ना, हाँ 64 ऑलरेडी लिखे. So question number 45, 18, 35, question number 37, question number 87, question number 51, question number 62, question number 74, 76, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. तो ये लिस्ट था. 29 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. रेस्ट 20 क्वेश्चंस मैंने जो नंबर लिखा है यहाँ पे, नंबर लिखा है यहाँ पे, विद ज्योग्राफी नॉलेज यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. So that's the reason why I ask my students to take geography optional, है ना. We are going to start up with this particular geography optional course June 24th at Ekam IAS Academy, है ना भाई. 29 क्वेश्चन प्लस 21 क्या है, मजाक है. 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, है ना. इसमें 80% आई कैन चैलेंज इट केम फ्रॉम द क्लास नोट्स इटसेल्फ डायरेक्टली. सो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन क्लास से है. Rather they might have come from the normal classes or from the IRP classes. These 50 questions, 29 direct questions from geography environment, 21 indirect questions from geography and environment, 50 question क्या मजाक है. So people who are from geography optional are going to rock this particular preliminary examination for sure. बाहर आने के बाद आपको पता लगेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले जो भी पढ़े हैं, they are going to solve this, address this particular 50 questions. This is my 100% promise, है ना. So these are the questions. आप I'm with complete proof. मैंने बोला था लास्ट 10 years से 33 से 35 क्वेश्चन आएंगे. 33 to 35 questions will come from geography environment. People have laughed at me. मैंने IRP videos लिया था. People have commented beneath the IRP videos. वेदरिंग कौन पूछेंगे, ये लैंडफॉर्म कौन पूछेंगे, वो कौन पूछेंगे, ये कौन पूछेंगे. अब देखो भाई सीधा प्रूफ के साथ आया हूं. यूपीएससी क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं दिया. मेनी पीपल हैव कमेंटेड, मुझे बहुत बुरा लगा. मई में आई हैव डिड फ्री आईआरपी ऑन यूट्यूब. पीपल, दीज इडियट्स हैव कमेंटेड ऑन मी सेइंग, क्रिटिसाइजिंग मी, बट मैंने वेट किया. जून 16 का टाइम आने दो बेटा, है ना. सो अभी टाइम आया, अभी टाइम है. 29 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट डायरेक्टली. 21 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा हूं सेट सी में. देखो 50 क्वेश्चंस हैव कम. इफ यू माइट हैव हर्ड माय वर्ड्स, क्लियर, इफ यू माइट हैव हर्ड माय वर्ड्स,
50 क्वेश्चन आपके जेब में, एटलीस्ट 40, 50 तो चलो भाई, एटलीस्ट 40 might have been in your pocket. ठीक है. Thank you for having and sitting with patience in this session. Thank you for watching this. And on June 24th, we are going to launch geography optional. Along with geography optional, rest of the optionals also we are providing like PSR. बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए पीएस पॉलिटी में, आईआर से 8 क्वेश्चन आए, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आए, आईआर से 8 क्वेश्चन आए, सोशियोलॉजी, पीएसआर, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं जून 24th 2024 at Ekam Academy. We are going to start up geography, PSR, sociology, anthropology, 4 optionals. जो भी ऑप्शनल लेंगे आई वुड बी हेल्पिंग यू, मजाक नहीं है भाई, 100% हेल्प करता हूं. ज्योग्राफी लिए तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. एंड ऑन 24th June we are also starting up the batch number 9 for UPSC 2025 and 2026. So please fill your details in the below link which would be given, or contact to the numbers which have been provided beneath you. Thank you for watching this session. Hope you clear this examination with flying colors. Thank you for watching this. Have an awesome day this weekend. We will come up with the rest of the paper discussion also. Anusha ma'am, Santosh Rao sir, they are coming up with their particular key explanations. They are coming up with the next videos. Please enjoy those particular sessions. Thank you for having patience with this particular session. Have an awesome day. Jai Hind.